India, there were empires in our neighborhood as well. हमारे पड़ोस में भी कुछ empires थे. So we saw that Iranian and Macedonian invasions हुए इसी time पर. Like all these things, if you can see, all these things are going on simultaneously. Like similar time period, all these things are going on like same time पे एक साथ ये सब चीजें हो रही हैं, है ना. After these invasions, ये invasions हुए, तो उसी टाइम पर क्या रहा था कि one dynasty it formed an all India empire. एक all India empire बना लिया, an empire encompassing whole subcontinent. पूरे के पूरे subcontinent के अंदर एक empire बन गया. We saw that the empire was of Mauryas. Under that Mauryas, we saw Chandragupta Maurya, Ashoka, and what Ashoka did, how Ashoka did, how Ashoka did, and how like he brought a change in the policy. How he brought a change in the policy, the भेरी घोष को धर्म घोष से replace कर दिया. During the same time, during this like same period, Sangam age was there, like in South India. Sangam age was there in the South India. So as we know that nothing is permanent. So Mauryas also came to an end. The golden period, though people don't use the word golden period, but for some it was a golden period of Indian history because Ashok was there. So the golden period of Indian history came to an end, and when the period ended, we saw a rise of various kingdoms like which rose on the ruins of Mauryas. Satavahanas in Deccan, Shungas in Eastern India, Kanvas in Central India, है ना, ये empires आए. और उसी ही time पर, like during the similar period, same period, there were some Central Asian contacts: Indo-Greeks, Shakas, Parthians, Kushans, Indo-Sasanians, है ना. तो there were several Central Asian contacts जो यहाँ इंडिया में यहाँ से नॉर्थ ईस्टर्न साइड से हो रहे थे इसी टाइम पर. And again after some time, again there was a empire, formation of a kingdom. एक empire फिर से आया, and this time it was the Varna number 3 Vaishyas. It was the Varna number 3 Vaishyas like which got a chance to rule India, and that was the Gupta age. Again, so many people say it like as a golden age of Indian history. We can say golden age of Indian history in terms of literature, in terms of development of science, in terms of development of arts and all those things, but not for society. You know that, but not for society. Here we can as include society as well. हम यहाँ पे society भी include कर सकते हैं, but not here. ठीक है. फिर Gupta age, we saw Gupta age. After Gupta age, तो Gupta age के बाद क्या हुआ? Guptas के time पर one thing came. It was something. There is a word in Hindi. It is called as Samantwad. So in English, Samantwad is feudalism. So we have discussed feudalism as well. What is feudalism? Like what was feudalism in Europe and what was the type of feudalism in India? We already discussed that feudalism. We saw during this period the rise of feudalism. With the rise of feudalism, there were several small kingdoms which rose. Several small kingdoms निकल कर आए. कई सारे small kingdoms निकल कर आए, है ना. अच्छा, एक चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व करी होगी already. At least once you have done modern, one thing you can observe, when ancient merges into medieval and when medieval merges into modern, here it was a rise of feudalism. Here it is a rise of capitalism. Can we say this? Is it a nice observation or not? Tell me. The transition period from ancient to medieval, it was a rise of feudalism. The transition period between medieval to modern, it is the rise of capitalism. सही बात है, एकदम सही बात है. You can use these things in your mains answers or in your answers while giving your interviews, personality tests.
ओके, ऐसी ऐसी चीजें याद रखनी चाहिए हमें, है ना। कई बार क्या होता है ना, देयर लाइक द थिंग्स आर विजिबल बट वो हमें फिर भी दिखती नहीं। दो द थिंग्स आर विजिबल बट लाइक हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग, एंशिएंट टू मिडिवल फ्यूडलिज्म एंड मिडिवल टू मॉडर्न कैपिटलिज्म। ठीक है, सो आफ्टर दिस गुप्ता एज, after this Gupta age, what happened? Rise of small kingdoms, and we also saw which were the kingdoms. तो कौन से small kingdoms आए थे? So already we have done all these things. So small kingdoms, this was the Gupta age. ये था गुप्ता एज, है ना। वकाटकास के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी, थोड़ा सा और बताऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा अजंता अजंता पेंटिंग्स, है ना। बिकॉज इट वाज द वकाटकास हु पैट्रोनाइज्ड अजंता पेंटिंग्स। ठीक है, वकाटकास ने भी बहुत पैट्रोनाइज किया था अजंता पेंटिंग्स को। तो आफ्टर द गुप्तास the territory got divided into like Pushyabhutis, Maukharis, Matrikas. पुष्यभूतिज, मौखारीज एंड मैत्रिकास, है ना। इन तीनों में सोसाइटी, लाइक इन तीनों के अंदर व्हाट हैपेंड, द एम्पायर गॉट डिवाइडेड इनटू दीस थ्री, पुष्यभूतिज, मौखारीज एंड मैत्रिकास। Thereafter it was Pushyabhuti like which became victorious, and Pushyabhuti under Harsha बना फिर से एक एम्पायर। हालांकि इट वॉज वेरी शॉर्ट लिव्ड एम्पायर, वेरी शॉर्ट लिव्ड एम्पायर अंडर हर्षा। इतना हमने यहां तक कर लिया है ना। टिल हियर वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन हिस्ट्री, जितना भी मैंने आपको रिकैप में बताया। एनीवन हैविंग डाउट लाइक कि हमने ये कुछ छोड़ दिया, ये नहीं करा, जो आपने बताया इसमें से ये कुछ छोड़ा, समथिंग लाइक दैट? ऐसा तो किसी के साथ कुछ नहीं है? अभिनय, चैत्रा, सिंधुजा, जानवी, कांची, सबना, साहिती एंड शुभ्रा, shall we proceed? So after this, what my suggestion is, give me a minute, I'm trying like to switch on this camera. पता नहीं क्या हो जाता है दोपहर में कैमरा को, आज तक मुझे कभी समझ नहीं आया, ये सिस्टम ही कभी समझ नहीं आया होता क्या है कैमरा को दोपहर में, why it's not working in the afternoon hours. This is seriously something which I haven't like which I can't understand after doing so many technical courses from like with government of India, with government of USA, government of Canada, and doing so many courses, like sometimes I feel like illiterate, seriously. या शुभ्रा, लंच टाइम ऑफ कैमरा, अब तो मुझे भी ऐसे लगता है लंच टाइम ऑफ कैमरा होता क्या है आज तक समझ ही नहीं आया। सो व्हाट यू कैन डू इज, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। नाउ बिफोर स्टार्टिंग मिडिवल आई विल बी टेलिंग यू द क्रोनोलॉजी। मैं आपको बताऊंगा क्रोनोलॉजी। For chronology, now what will be happening? We can divide India into two: North India and South India. North and South India. Also, there will be one more division. It will not division of India. It will be like world. I want you all to make one table. ठीक है, टेबल में यहां पर देयर विल बी डेट, ठीक है, डेट एंड ड्यूरेशन। हियर इट विल बी नॉर्थ इंडिया, हियर इट विल बी साउथ इंडिया, हियर इट विल बी वर्ल्ड, so you need to prepare this sort of a table. एक ऐसा टेबल बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा, लाइक इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक average north, who were ruling in the north, at the same time who was ruling in the south, and which empire was dominant in the world. So you will be having a very clear cut understanding of the contemporaries, है ना। सबसे बड़ी मुसीबत है ये हिस्ट्री के अंदर, most of the students know chronology but not the contemporaries. This is the one of the biggest problem in history that student faces. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आज आपकी खत्म हो जाएगी, लाइक इट्स माय प्रॉमिस टू यू ऑल। अगर आपने रिवाइज भी कर लिया साथ में तो परमानेंटली खत्म हो जाएगी। तो यू नीड टू प्रिपेयर दिस टेबल। आई होप आपको पता चल गया हाउ मेनी कॉलम्स एंड
like you can extend the rows later, but at least how this is the number of rows that you require. You can also add one serial number if you want. It's up to you, serial number. Otherwise I require 1, 2, 3 and 4 columns in this table. ठीक है? ठीक है, सबको समझ आ गया? Anyone having any doubt on this? Anyone having any doubt on this? Okay, so I use the whiteboard. Okay, the first, date, north, south and world. The first is like अगर कोई पूछे medieval period कब से शुरू होता है? From where does medieval period starts? So there are different people, like for them medieval period का starting अलग है, modern का अलग है. In fact modern के इतनी ज़्यादा confusion है कि modern period कब से शुरू होता है. There are so many people who say that modern period starts with the arrival of Europeans. है ना, मैं भी in fact यहीं से start करता हूँ modern classes, arrival of Europeans. Then there are the others who say modern period start after the revolt of 1857. So basically there are so many views, so many different views. We don't require so many views. थोड़ा सा एक हल्का सा idea होना चाहिए from where medieval period starts. So medieval period starts, we can divide medieval period into 3 parts. Early medieval, middle medieval and later medieval or pre-modern period. So early is like generally जो हम period लेते हैं it's 600 to 1200 AD. 600 to 1200 AD. Middle medieval period is roughly, this is all roughly, ठीक है, there's no clear cut boundaries, just roughly 1200 to death of Aurangzeb, है ना, till death of Aurangzeb. And Aurangzeb died in the year जानवी 7 और लगाओ इसके अंदर 1707. Very good all of you. Kanchi, Shubhra, Sabna, Janvi, very good. So 1200 to 1707, and after that pre-modern period 1707 to 1857. Okay, this is the division that we make. So now we'll see the contemporaries. अब हम देखते हैं contemporaries कि who are the contemporaries. Give me a minute, I just erasing it. Okay, तो first शुरू करते हैं 600. Please prepare this table. 600 to 750 AD. 600, this is 600, 600, 600 to 750 AD. North में who were ruling in the north? Like the dynasties, the kingdoms. North में कौन थे, south में कौन था, world में कौन था? In the north during this period there were number 1 Pushyabhutis. You remember Harsha died in the year Mrigank? Yes Mrigank, Harsha died in the year? Yes Mrigank, are you there? Kanchi, Harsha died in the year. Kanchi, how are you now? आपकी तबीयत कैसी है? Yes, sir. Not well. Still not well? Yes, sir. Have taken the medicines? Yes, sir. I have taken medicines. Yes, still problems? Yes, sir. Actually, doctor telling me that you have migraine problem. I don't know. अरे डॉक्टर सा कैसे बोलते रहते हैं, ज़्यादा ध्यान देना. Yes, sir. So Harsha died, sir, in 647 AD. 647 पक्का? Yes, sir. I am sure. तो इसका मतलब 600 में तो पुष्यभूतिस आ जाएगा ना. सो पुष्यभूतिस, मौखारीज एंड मैत्रिकास, है ना. हम ब्रॉडली ले रहे हैं, ब्रॉडली. दिस इज जनरली और यू कैन से ब्रॉडली. इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, एंड अभिनय, हाउ आर यू नाउ? आपकी तबीयत ठीक है? Are you fine now? Okay, Abhinay. And Janvi,
all the like rituals and all those things completed? Okay, so you will be for 13 days. For 13 days. Okay, okay. Okay, Janvi, no problems. So Pushyabhutis, Mokharis, and Matrikas, like basically they were contemporaries, and Pushyabhutis were the one like who won over these. है ना, आपको याद ही है क्या हुआ था? मोखारीज और मैत्रिका, एक वो सिस्टर राज्यश्री एंड वाली स्टोरी सबको पता ही है ना, वो मैं रिपीट अभी नहीं कर रहा हूँ. During the same period, the people in the south, number one, were Pallavas, Chalukyas, and Pandyas. Now these Pandyas, अगर आपको याद होगा, हमने एक Pandyas पहले भी करे थे, Cholas, Cheras and Pandyas. Remember Sangamej, Cholas, Cheras and Pandyas, Madurai, है ना, Sangamej. So basically now these Pandyas are called as later Pandyas. ठीक है, these Pandyas are called as later Pandyas. During the same period, who were ruling in the world? During the same period, world में कौन rule कर रहा था? तो world में the name of the empire was Byzantine Empire. ये सभी ने बताओ. So these later Pandyas were basically like the following generation of the previous Pandyas only, or they were like different rulers, but the name was Pandyas itself. There is a controversy, same controversy for Pandyas as well as for Cholas. Some people say कि when Kalbhras came, याद है ना Kalbhras आ गए थे? Yes, Kalbhras आ गए थे. When Kalbhras came, all these people went into hibernation sort of a thing. है ना, जैसे Yes, hibernation में चले जाते हैं ना, ऐसे चले गए थे. And then fighting themselves, and they eventually got weak. हाँ, उनकी जनरेशंस चुपचाप टाइम निकालती रही. एंड जब लगा कि नाउ लाइक वी कैन कम बैक टू पावर, so they came back again. There are some people who feel no, they don't have any links with the earlier people. So we have both the views. दोनों opinions है हमारे पास. For Pandyas as well as for Cholas. अभी Cholas दोबारा आएंगे, तक मैं Cholas ही बताऊंगा. 2 मिनट रुको, Cholas को भी लेके आता हूँ. First वर्ल्ड का बताया हूँ. So Byzantine Empire with the center of power at Rome. Rome इनकी center of power था Byzantine power का. ठीक है. तो apart from this power, there was Sasanian power, Sasanian Empire, and one was Rashidun Caliphate. So this was the first caliphate after the death of Prophet. तो ये सारी बातें बताऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा coming of Islam और origin of Islam. We'll be discussing this thing. Origin of Islam discuss करेंगे, how Islam originated, क्या हुआ, prophet, like who was prophet, क्या हुआ prophet के साथ में, why he went from Mecca to Medina, which year is regarded as the like birth of Islam. इन कौन सी ईयर को हम बोलते हैं कि इस ईयर के अंदर इस्लाम का ओरिजिन हुआ, और इस ईयर को ही क्यों बोलते हैं. तो ऑल दोस थिंग्स आई विल बी टेलिंग यू. एंड आफ्टर प्रॉफिट उसके बाद क्या हुआ इस्लाम में, लाइक हु आर द लीडर्स. तो उसके बाद कैलिफ्स आ गए थे. कैलिफ, खलीफा, इन हिंदी वी यूज द वर्ड खलीफा और कैलिफ्स. So there were different caliphs. So Rashidun was the first caliphate after the death of Prophet. Could you repeat the name? Sindhuja, kaun sa wala? Rashidun. You can write the spellings: Byzantine, Byzantine Empire, Sasanian, Sassanian, and Rashidun, Rashidun, Rashidun Caliphate. It is called a Rashidun Caliphate. ठीक है, इसको empire की जगह हम caliphate word use करते हैं. This was all these like are from during this period, and roughly all these were contemporaries. roughly again I am using roughly. पता चल रहा थोड़ी देर में कोई लेके आ रहा है कोई contemporary नहीं था. roughly ठीक है, कोई इधर से शुरू हुआ तो उधर खत्म, उधर से शुरू हुआ उधर, something like that. Now I'll show you all these in a map. Give me a minute please. So you can see Pallavas, Pandyas, and Chalukyas. Can you see this? Pushyabhutis और मैं ये तो सबको पता ही है. So Chalukyas किस एरिया में है?
चालुक्य जिस एरिया में है, चालुक्य से पहले वहां पे कौन था? यस, चालुक्य जिस एरिया में है, हु वाज देयर इन दिस एरिया लाइक बिफोर? वेरी गुड, वेरी गुड. शुभ्रा, दामिनी, मृगांक, साहिती, लाइक वेरी गुड. इट वाज सतवाहनास. अभी तो कितना आसान लग रहा है ना, मैप साथ साथ देखते रहना है, एंड थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी इजी. नाउ बाइजेंटीन एम्पायर. So this is Byzantine Empire. This is Italy. If this is Italy, that means this is Mediterranean Sea. This is Mediterranean Sea. This is the region. This is the region that is called as Mediterranean type of climate. याद है मैंने बताया था winter rainfall, Mediterranean type of climate. So just bordering the Mediterranean region, एक empire था. It is called as Byzantine Empire. Byzantine Empire. तो दिस वाज द एम्पायर. बाइजेंटीन के बाद एक और मैंने नाम लिया था, सैसेनियन एम्पायर. सैसेनियन एम्पायर, इफ यू कैन सी दिस सैसेनियन एम्पायर, लाइक दिस इज इंडिया, दिस इज गुजरात. ठीक है, तो ये इंडिया के पड़ोसी हैं सब, है ना. दिस इज इंडिया के पड़ोसी, द नेबर्स ऑफ इंडिया. दिस इज अरेबियन पेनिनसुला. अरेबियन पेनिनसुला जहाँ पे बर्थ ऑफ इस्लाम होने वाला है ना. इस्लाम का बर्थ यहीं पर ही होगा. ठीक है, एक और कैलिफेट बताया मैंने, राशिदुल कैलिफेट. तो एक एक करके लाइक एक आ रहा है, एक जा रहा है, समथिंग लाइक दैट, है ना. एक आ रहा है, एक जा रहा है. बाइजेंटीन, ससानियन, राशिदून, these were the empires. These were the empires during this period. कौन सा पीरियड? 600 to around 750. ब्रॉडली, बार बार यूज कर रहा हूं वर्ड ब्रॉडली. ओके, नेक्स्ट चलते हैं 7. अब इस पीरियड के आगे चलते हैं. 750 तक हमने देखा. आफ्टर 750 टू 1000, 750 टू 1000. अब क्या होगा? नॉर्थ में चेंज, साउथ में चेंज, वर्ल्ड में चेंज. चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. आफ्टर टुडेज क्लास, है ना, टुडेज क्लास आपको पक्का हो जाएगा कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. हूएवर इज थिंकिंग कि आई एम देयर forever and forever, that person is most foolish person, है ना. सबको ऐसे ही लगता है उस टाइम पे, बट हिस्ट्री कुछ और ही बताती है. सो नॉर्थ में what will happen? So all these are gone, and नॉर्थ में क्या होगा? नॉर्थ एंड डेक्कन. अभी मैं इसमें डेक्कन भी लूंगा एक. सो प्रतिहारस, और यू कैन से गुज्जर प्रतिहारस, पालास के बाजू में सेनास, एंड राष्ट्रकूटास. यहाँ लाइन लगा देना. ठीक है, सो गुज्जर प्रतिहारस, पालास, सेनास एंड राष्ट्रकूटास. साउथ में क्या होगा? साउथ के अंदर कोई आएगा, लाइक एंड अभी सब कुछ खत्म. साउथ में कोई और ही नया अध्याय आएगा, एंड दैट अध्याय विल बी कॉल्ड एज इंपीरियल चोलास. ठीक है, दिस चोलास आर कॉल्ड एज इंपीरियल चोलास. इसलिए बोलते हैं बिकॉज देयर वर मेनी पार्ट्स आउटसाइड इंडिया, लाइक जो इनके अंडर में आते थे, है ना, वो इनके सबऑर्डिनेट्स थे. यू कैन से देयर वाज सबऑर्डिनेट्स ऑफ चोलास. तो इसलिए इनको बोलते हैं इंपीरियल चोलास. इंपीरियल, है ना, लाइक इंपीरियलिज्म. आई होप आपको सबको पता है व्हाट इज इंपीरियलिज्म. एवरीवन नोज व्हाट इज इंपीरियलिज्म. यस, व्हाट इज इंपीरियलिज्म? साहिती, व्हाट इज imperialism, Saiti? So when a superior country controls the policies of other countries, or they're under that country. वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया. तो चोलास, ये वाले जो चोलास थे ना, इन्होंने भी ऐसे ही कर रखा था. अभी मैप दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट. एंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड वर्ल्ड के अंदर जो मेन एम्पायर था, एम्पायर चेंज हो गया, एंड नाउ द एम्पायर वाज अब्बासिड एम्पायर. अब्बासिड एम्पायर 750 से 1517 तक था ये एम्पायर. 750 से लेकर 1517 तक ये एम्पायर था, अब्बासिड एम्पायर. ठीक है, राशिदून कैलिफेट. अब एम्पायर कौन सा आ गया? अब्बासिड एम्पायर.
we don't require that, like dates एक एक नहीं करने की जरूरत है, बस पता होना चाहिए कौन कहाँ पे fit होगा. Okay, but before going further, how many of you were not present yesterday for the test? Chaitra, Damini, Sahiti. चैत्र ने पहले बोल दिया मेरे एग्जाम थे, मेरे में गलती नहीं थी, मैंने तो आपको पहले बता रखा है, मेल भी कर रखा है ना चैत्रा. एंड दामिनी, चैत्रा एक्सेप्टेड. दामिनी, यू? व्हाट हैपेंड दामिनी, हाउ एंड इज ही फाइन? ठीक है ना, कोई ज्यादा चोट तो नहीं लगी? आई होप ही इज वेल. एंड साहिती, व्हाट हैपेंड टू यू? I was just finished with the last function on the Sunday, so I was covering the classes. Okay, so now you will be regular. आपके घर किसी की शादी थी, I guess? Yeah, my cousins. Your cousin, and you didn't invited us. है ना, देख रहे हो साहिती? Not even like you have sent the sweets to us. Though I'm not eating sweets, I don't eat sweets now. Now I don't eat sweets. It's just 15-20 days. I have stopped eating sweets because like my like sugar levels like increased a bit. तो मैंने भी छोड़ दिया, नहीं तो I was a lover of sweets. बहुत पसंद थी. Okay, Sahiti, I hope like things went well and you enjoyed, and please try to be consistent now. Okay, Sahiti? Yeah, from today on I'll be regular, sir. I have completed all the classes also. Okay, great. Because I can see like generally the strength of the class is like 10, 11, 12. This is the general strength. As soon as sometimes it comes to 6, 7, something like I start doubting myself. कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, है ना? कई बार ऐसे हो जाता है कि आई एम डूइंग any mistake. Okay, so I was showing you one map. तो हमने देखा राशिदुल कैलिफेट के बाद I need to show you गुज्जर प्रतिहाराज, पालाज एंड राष्ट्रकूटास, है ना? आपने ये लिखा होगा कन्नौज ट्रायंगल, all were fighting for Kannauj. This is Kannauj, this city. Can you see this city? And can you see this overlaps? Here also overlapping, here also overlapping. Can you see this overlaps? Why is this overlapping? Because all three are fighting for one. It's something like three boys fighting for a girl. Something which happens in our school days. है ना? Something which happened in our school days. ऐसे सब कुछ होता है ना अभिनय आपको तो पता ही होगा, ज्यादा बेहतर पता होगा अभिनय आपको, है ना अभिनय? So all three fighting for one city, that is Kannauj, and it like Kannauj became the Kannauj because of which man? Sir, all boys school. Oh my God, Abhinay, why your parents did like that? Oh, Abhinay, I'm so sorry, Abhinay. Yes, sir, अभी तक गुस्सा हूँ अपने पेरेंट्स से. ओके, ज्यादा नहीं बोल सकता भी क्लास के अंदर. मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी अभी, लेकिन ओके. Yeah, I was lucky. I was really very lucky, and like it was something like that. All like I was friend to all the girls. Literally, I was friend to all the girls in my class. Like till my 10th class, I was in a convent school. 11th, 12th, I did from Army School Meerut, and after that, I was in Meerut College. So everywhere, like I was friend of all. जितनी भी girls होती थी, like I was like, समझ लो ना, इससे इतने तो समझ जाओगे अब आप अभी. Okay, so Kannauj was something. These people were fighting for Kannauj. ठीक है, तो कभी कन्नौज इसके पास, कभी कन्नौज उसके पास, and then कन्नौज किसी तीसरे के पास, something like that. Fighting, and this is the reason why this phase is called as the Kannauj triangle, or it is also called as tripartite struggle. Tripartite struggle, है ना? Because three powers are there, so it's called tripartite struggle. इसको tripartite struggle भी बोलते हैं. After this, south में कौन था? It was the Imperial Cholas. Now just see,
देख रहे हो, हमने भी दूसरे देशों के ऊपर जाके रूल कर रखा है. Can you see this? Can you see this? So this was the main territories of Cholas. This was the main territory of Cholas, and this was the sphere of influence. This was the sphere of influence, and this is the reason why Cholas are called as imperial Cholas. When Cholas were ruling this area, Bay of Bengal was called as Chola Lake. It was called as Chola Lake. देखो पूरा का पूरा चोलास ही चोलास है आर पार. It was called as Chola Lake, है ना? इसको चोला लेक बोलते थे. And during the same period, world में I told you it was Abbasid Empire. So this was the region of Abbasid Empire. So this is India. If you can see, मुझे बता देता हूँ आपको कि ये like हम कहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है? So this is India. Okay. So Abbasid Empire हो गया. Now हमने देखा up till 1000. Coming like like आगे चलते हैं. Proceeding from 1000. So 1000 to 1200. 1000 to 1200 AD. North was ruled by Rajputs. अब north में आ गए Rajputs. For a kind information, Gujjar Pratiharas were also Rajputs. है ना? Gujjar Pratiharas were also Rajputs. So now there were different types of Rajputs. अभी दिखाऊंगा मैप आपको, है ना? कहीं पे गेहदवालास, कहीं पे परमार्स, कहीं पे Pratiharas. Like it was something different Rajputs. Sir, the Gujjar used there are the same of today, Gujjar Pratiharas. So Janvi, again there's a confusion in this. Like at present there is a caste called as Gujjars. North है बहुत ज़्यादा है, and I guess जिस area में आप रहते हो, नोएडा में there is a lot people like of this caste, and basically they are agriculturalists. Generally they are agriculturalist people like Jats, है ना? Jats की जैसे agriculture करते हैं, and एक tradition भी होता है गुज्जर्स के अंदर. I don't know whether you are aware or not. There is one tradition like in Gujjars, the dowry system is reverse. Do you know this, Janvi? The dowry system is reversed. It means the boy gives dowry to the girl. No, Sindhuja, it's nothing to say wow. I'll tell you what's happening is the boy's family gives some dowry to girls. Specifically, the dowry includes one thing, and that's tractor. So tractor is one of the most important thing. It's like Aryans के लिए horse. It's like Aryans के लिए horse. So tractor ऐसा था. नहीं सब, it's not because of trade. It is because these people are agriculturalists and they'll require tractor while doing agriculture. Okay. तो अभी तक तो wow लग रहा था सिंधुजा, but the thing is, when the boy or boy's family is giving something to the girl's family and then they are taking the girl, basically they are buying the girl. And never in the life that girl is allowed to go back to their parents to meet the parents or like brothers, sisters, siblings, etc. Okay, so that's the scene. So I don't know, like अब ये अच्छा है क्या बुरा है ना? Like you told something like this for हरियाणा. अरे वो हरियाणा में तो मैंने नेपाली लड़कियों के लिए बताया होगा जानवी. That was for Nepali girls. है ना? Nepali girls, हरियाणा like sex ratio इतना adverse है. Like Aishwarya and Devdas, I haven't watched Devdas. I don't want to be Devdas na, so I haven't watched Devdas. I don't like that type of like things. So, sir, they're same or not? Like the name? This Gujjars, you are saying these Gujjars are Rajputs? No, Some because people, I know that so, Gujjars present they are not Rajputs. So what my question is that this Gujjar Pratiharas you just mentioned na, that they are Rajputs. So that is yes, what I'm they were asking. Rajputs. Yes, they were Rajputs. Okay. These Gujjar Pratiharas, they were Rajputs. ठीक है, पालास नहीं थे, राष्ट्रकूतास नहीं थे, गुज्जर प्रतिहारास वर Rajputs. अब इस पीरियड में, in the period 1000 to 1200 period, in the north, there were different Rajput kingdoms. Different Rajput kingdoms will be there. In the south, again, there will be multiplicity of kingdoms,
and the kingdoms which came were Yadavs of Devagiri. You write this way, Yadavs of Devagiri. And whenever you need to like name these Yadavs, always use this sentence: Yadavs of Devagiri, Kakatiyas of Warangal, Hoysalas of Dwara Samudram, तो आपको याद नहीं हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा कि यादव्स कहां पर थे. यादव्स ऑफ देवगिरी, काकतियास ऑफ वारंगल एंड होयसालास ऑफ द्वारा समुद्रम. इनको आइसोलेशन में वर्ड यूज मत करना. ओनली होयसाला वर्ड कभी यूज मत करना, बिकॉज इन एग्जाम अर्लियर आल्सो इट हैज बीन आस्क्ड, मैच द फॉलोइंग एरिया और डायनेस्टी. अभिनय सर, हु वर इन नॉर्थ? राजपूत्स. Abhinay, different Rajputs were in the north. Chaitra, Yadavs of Devagiri, the Deogiri, Kakatiyas of Warangal, Hoysalas of Dwara Samudram. Karnataka, present day Karnataka. Okay, Kakatiyas, Warangal means present day which state? Kakatiyas present day which state? कौन से स्टेट होगा? वारंगल is where? Telangana, so you can say Andhra, है ना? Andhra. And Yadavs of Devagiri, so Devagiri is in at like which place? महाराष्ट्र. क्या बात है मृगांक. मृगांक बहुत बढ़िया. कुछ चीज आपकी बहुत स्ट्रांग है मृगांक. Seriously, मृगांक, like there are some, there is an area like in which you are very strong. I have seen that, I have observed that. Okay, so during this period ये लोग नॉर्थ में थे, ये लोग साउथ में थे. वर्ल्ड में who was in the world? So world में at this point of time एक empire आया, and that empire was called as Ghaznavids. ठीक है. एक और एम्पायर आया, ख्वारिज्म. ईरान में बेस्ड था ये ख्वारिज्म एम्पायर. गजनवीड्स एंड ख्वारिज्म एम्पायर. तो अब देखते हैं इनके एरियाज. तो दिस वाज अब्बासिड एम्पायर. अब्बासिड हमने देख लिया था. अब देखते हैं राजपूत्स. नाउ सी राजपूत्स. गुज्जर, प्रतिहारास, परमार्स, चंडेलास, गहदवलास, तोमर्स, है ना, कितने सारे कहमनास. सो मेनी different types of राजपूत्स इस एरिया में आ गए. नॉर्थ में सो मेनी राजपूत किंगडम्स. कितने सारे राजपूत किंगडम्स आ गए नॉर्थ के अंदर. ठीक है, धीरे धीरे वापस भी चले जाएंगे. तो राजपूत्स के बाद में यू कैन सी यादव्स ऑफ देवगिरी, काकतियास ऑफ वारंगल एंड होयसालास ऑफ द्वारा समुद्रम. एंड वर्ल्ड में this is the Ghaznavid empire. Again, this is India. You can see ये इन्होंने पीओके हमसे छीन रखा है इस मैप के अंदर. ठीक है. सो हम जब तक हम दे नहीं देते तो हम तो मानेंगे कि हमारा ये एरिया. तो इस मैप के अंदर ये प्लीज डोंट कंसिडर एज द बाउंड्री. प्लीज डोंट कंसिडर दिस एज अ बाउंड्री एज ऑफ नाउ. तो दिस इज दैट गजनवीड एम्पायर. दिस इज दैट अरल सी. मैंने पहले भी आपको बताया था अरल सी के बारे में. देयर आर 2 rivers which fall into अरल सी. याद है? 2 rivers falling into अरल सी, अमू दरिया, शिव दरिया, है ना. So this is the Ghaznavid empire. One was okay. ख्वारिज्म की मेरे पास में पिक्चर नहीं है. ख्वारिज्म like it was, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ. This was very near to this empire, Ghaznavid's empire. This was based here. ख्वारिज्म empire था यहाँ पर, like present day Iran. ख्वारिज्म empire. So ईरान के आसपास वाला एरिया. So it was ख्वारिज्म empire. तो अभी तक मैंने कहाँ तक बताया आपको? अभी तक कहाँ तक बताया? 1200. अंडर दिस 1200 वर्ल्ड में एक और डायनेस्टी आ गई. इट वाज घुरीद डायनेस्टी. घुरीद्स. गोरी याद है ना? मोहम्मद गोरी. Ghurid dynasty or Ghurid empire. And this time, can you see this? You see this
बंगाल से लेके पूरा इंडिया सेंट्रल एशिया तक इट वाज अंडर लाइक घुरीज, इट वाज अंडर घुरीज, गोरी के अंडर में, है ना, गोरी के अंडर में। अंदर गोरी वेंट बैक एंड इंडिया के अंदर छोड़ दिए 2 कंप्यूटर्स अपने, ठीक है। सो ये बाद में बताऊंगा आपको। फिलहाल लाइक इट वाज घुरी डायनेस्टी, यहाँ पर आ गई। अब चलते हैं 1200 1500 तक। 1200 to 1500 in Delhi it was the बोलते हैं, what's that word, Delhi Sultanate, Delhi Sultanate. Sindhuja, that's conflicting with Rajputs. Yes, Sindhuja? Professor, I mean, like this Ghurids. Ghurid, yeah, the Ghurid Empire kind of looks like it's like overlapping with the Rajputs. Okay, so I'll tell you. वैसे तो you'll better understand that when I'm teaching you that Gori, Muhammad Gori, but अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, there was a war called as Battle of Tarain. Battle of Tarain 1191, then Battle of Tarain 2 1192. These two battles were fought between Bragang. Very good, Bragang. The battles were fought between. Yes, Bragang. Battles were fought between. Rajput, Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori. क्या बात है, वेरी गुड। इट वाज राजपूत पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गोरी, गोरी वर्सेस चौहान। बहुत ही शानदार स्टोरी है इसकी भी, इन बैटल्स की भी, ठीक है। आई विल बी टेलिंग यू दोस स्टोरीज। सो इन द फर्स्ट बैटल इट वाज पृथ्वीराज चौहान हु डिफीटेड गोरी, है ना। इनफैक्ट गोरी को छोड़ दिया था बस। अगर पृथ्वीराज चौहान चाहता, if पृथ्वीराज चौहान I wanted to, like he would have killed this man. He would have killed this man. गोरी की इतनी like इतना ज्यादा he was hurt, इतना ज्यादा वो चोट लग गई थी that his people were taking him over the shoulder and were running. And then some people were asking Prithviraj Chauhan, why you are not attacking them? We must kill them. Then Prithviraj Chauhan ने बोला था नहीं हमें नहीं मारना है ना, like we cannot fire from the back, we cannot attack from the back. But 1192 में गोरी ने defeated Chauhan. So getting this thing, Sindhuja, why this is overlapping, है ना, why this is overlapping, अभी समझ आया ना Sindhuja? Okay, but it was nice question. अच्छा मैंने पहले बताया था ये, okay, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। Then कहाँ क्या बताना था मुझे? 1200 to 1500. So here Delhi Sultanates, SKTSL. Please remember this code always, है ना, कुछ ही भूल जाना लेकिन ये मत भूलना SKTSL. So many times this question have been asked in so many exams. Please arrange chronologically. Simple question. Slave dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyids and Lodhis. So remember this code SKTSL. Then साउथ में अभी क्या हुआ, 2 एम्पायर लाइक 2 किंगडम्स आ गए। वन वाज विजयनगर, अदर वाज बहामनी। विजयनगर एंड बहामनी किंगडम ये आ गए कहां पर? साउथ में, इन द साउथ। ये चैत्रा इन द साउथ। अभी मैं मैप दिखाता हूँ, गिव मी सम टाइम। इन द वर्ल्ड में कौन आ गए? It was the Mongols, SKTSL in north. Yes, they are in the north, they are in the south. Mongols in the world. Janvi, I'll show you in the map. Like तुगलक्स ने विजयनगर और बहामनी को अपने अंडर में ले लिया था, है ना। I'll show you again. मैंने बोला this is broad classification. Okay, this is broad classification. World में it was the Mongols may be like the the people are called as Timurids.
मंगोल्स लाइक तिमोरिड्स। अब देखते हैं इनके मैप्स। गुरीद हमने ऑलरेडी देख लिया था। आफ्टर गुरीद दिस इज दैट दिल्ली सल्तनत। सो सिंधुजा ने पूछा था, जानवी किसने पूछा था? जानवी कैन यू सी दिस? तुगलक्स एंड कैन यू सी दिस? जानवी है ना? तो तुगलक्स ने इस रीजन को अपने अंदर में ले लिया था। दिस ममलूक डायनेस्टी इज स्लेव डायनेस्टी। दिस इज स्लेव डायनेस्टी। ओके, दिस इज स्लेव डायनेस्टी एंड स्लेव डायनेस्टी के बाद स्लेव डायनेस्टी इज आल्सो कॉल्ड एज ममलूक डायनेस्टी। देन खिलजीज के बाद तुगलक्स के बाद बीच में एक और आना चाहिए थे यहाँ पे, सैयद्स। तो these sultanates of Delhi were from 1206 to 1526, 1206 से लेकर 1526 तक, till the first battle of Panipat, 1526 first battle of Panipat and the regime changed। अभी उसके बाद मुगल्स आ जाएंगे। So Delhi Sultanate in the north, south में it was the Vijayanagar and Bahmani kingdom। So you can see this was Bahmani and this is green is Vijayanagar. This is Vijayanagar. Okay, Bahmani and Vijayanagar kingdom. And Mongols, so you can see the empire of Mongols. Can you see the empire of Mongols? The huge empire, and a huge empire of Mongols. That's so huge. ठीक है? So अभी तक सबको समझ आया? Tell me, anyone having any doubt, any problem till here? Yes, anyone? Professor. Yes, Indra. But the Abbasids were there till 1517, right? हाँ, तो देखो ना एक बार, just see Abbasid का मैप देखो आप एक बार, where are Abbasids? Just see Abbasids, है ना? और अभी मैंने क्या बोला? अभी मैंने बोला Mongols। So can you see this? Okay, and that is like, है ना, जो थोड़ा बहुत ये area होगा that is shrinking, है ना? But still this area is left। Okay, Sindhuja? Clear? Doubt clear, Sindhuja? Professor. Yes, Sindhuja? Shall we move ahead, Sindhuja? yes, sure, Professor. Okay, पक्का ना? मतलब किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बता देना। लाइक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आज हम ये देख रहे हैं ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल नॉट फाइंड दिस थिंग in this manner in this book. This is something I had like collected from this and I have prepared this। Okay, so you will not find in this manner anywhere कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। ट्रस्ट मी, किसी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिला था कहीं पे। एंड आई वाज वेरी लाइक वेरी डिस्टर्ब्ड इस एरिया के अंदर कॉपीराइट ना सिंधु, यू कैन यूज इट। अभी मैं कोई बुक पब्लिश नहीं करा रहा ना, so you can use it। I'll be sharing this PPT। In fact, I guess I have shared it already। आपको आज मिल जाएगी। Already I have shared it। Sir? Yes, Kanchi? So just one more question। So one we more? had done two more पूछो। okay, we had done now that medieval in early that 600 to 1200 AD almost roughly। So Pushyabutis we had done in ancient and they were around 600 to 700। मैं तो फिर बार-बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ कांची, broadly। So they were come under ancient or medieval? हाँ, देखो मैंने आपको ये वाली बात पहले ही बताई थी। There are so many people who are taking harsha in medieval। ठीक है, generally I am taking harsha in ancient। I am taking in ancient because like they were the feudatories of Guptas and Guptas come under ancient। This is the only reason why I'm taking like harsha in ancient। Otherwise there are so many people like who are taking harsha in the medieval। Actually it is a transition। In fact आज की क्लास का नाम है transition phase। If you can see on your screens, है ना, क्लास का नाम ही आज transition phase है। This is the transition phase, है ना, we are transiting like and I don't know for you what happened, but जब मेरा transition हुआ था ना क्लास 10th से क्लास 11th में, है ना, when I was promoted from class 10 to class 11th, first of all my board changed till class 10th। from like LKG to class 10th I was in ICSC board and in 11th I came in CBSE।
आर्मी स्कूल मेरठ. Oh my God, seriously, इतनी परेशानी मुझे आई ना, like I still feel something is missing between 10 and 11. There is something that is missing between 10 and 11. एकदम से जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है ना, तो my wife is master of that differentiation and integration, by the way, but not me. मेरे लिए like differentiation आज भी जब मैं ये symbols देख लेता हूँ ना, ये वाले and dt by dx, तो my heart beat like it changes, something like that. अभी भी मैं अगर देख लेता हूँ. Oh Sabna, you also loved it. for me it was something. Oh my god, like क्या बताऊँ मैं बहुत डरता था इससे, बहुत डरता. डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वाज समथिंग मुझे समझ ही नहीं आई एकदम से कहां से आ गया. अभी तक तो एकदम से कुछ था ही नहीं. लाइक टिल क्लास 10th इट वाज ऑल अर्थमेटिक एंड सडनली अर्थमेटिक गॉट लाइक पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी इन मैथमेटिक्स. ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है अभी, है ना. अजीब सा ही लाइक पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया. सिंधुजा बेटर देन आईएससी. आई डोंट नो सिंधुजा, लाइक अभी तो मुझे 11th और 12th सीबीएसई का ही पता है, नॉट आईएससी. मेरे स्कूल में आईएससी नहीं था एक्चुअली. सो माय फादर ही वांटेड मी लाइक टू स्टडी फर्दर इन आर्मी स्कूल बिकॉज I'm staying in Meerut Cant. So I hope you understand that, है ना. वो थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा. My house is in Meerut Cant. It's the second largest cantonment of India, and in like during my childhood days, first floor पे, मेरे घर में first floor पे, it was always like we have rented out the first floor to the people from army. So जितने भी army personnel होते थे, like it was only exclusive for that, like rent only to those. So like my parents, they were like very obsessed with those like army people. So was I. Okay, चलते हैं आगे. तो दिल्ली देखा हमने, विजयनगर, बहमानी, मंगोल्स. इसके बाद नेक्स्ट 1500. तो हमने देखा था 1500 तक. कैलकुलस वाज समथिंग व्हिच नेवर गॉन रॉन्ग. ओ माय गॉड सबना, कैसे कह सकते हो ये. फॉर मी कैलकुलस वाज समथिंग व्हिच नेवर गेट्स लाइक राइट, है ना. हमेशा ही गलत करता था मैं तो. ऊपर से मेरे जो टीचर थे, माशाअल्लाह, इतने अच्छे किसी को ना मिले. लाइक यार, नेवर राइट. ओके, सो 1500 to 1707. 1500 to 1707. My maths teacher in class 11th, like मुझे हमेशा लगता था like he was, every time he was weeping from inside, he was crying from inside, है ना. And he, like, it appeared to me like every time he's singing that song, my heart is beating, it's repeating. नहीं बोला नहीं, it's raining and my heart is crying, something like that. There is a song ना, तो ऐसा मुझे लगता था. He's always like, every time he was crying, his face was every time like this, and I don't like such type of faces. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे फेसेस. I like this type of faces. इसमें मुझे बड़े मजे आते हैं. Otherwise बड़ी दिक्कत हो जाती है. My bio teacher was like that. She was always like this. And this was the reason I was having maths plus bio both. 11th and 12th I was having maths and bio both. दोनों सब्जेक्ट्स थे मेरे पास, मैथ्स भी bio भी. Okay, 1500 to 1707. In the north, अभी नॉर्थ में आ जाएंगे मुगल्स. With Mughals will be some Rajputs. आपको तो पता ही है राजपूत एंड मुगल्स का रिश्ता, है ना. दोनों they were relatives. I hope you know that. जोधा अकबर, है ना, like हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ कर रखी है ना. जोधा अकबर, when I'll be telling you, like you'll be amazed to know कि so many things. So Mughals and Rajputs here. साउथ में क्या बात है मृगांक. South में they were Marathas now. Marathas power. South में they were Marathas. ठीक है, South में they were Marathas. Okay, and world में like Mongoloids, जो Mongols थे, world में वही अभी चलेंगे. तो एक बार मैप देख लेते हैं. So this was the Mongol Empire. This was the Marathas. तो हमें पता ही है like Marathas पहले यहाँ तक थे, उसके बाद they expanded here. When they expanded here तो 1759 के बाद year 1761, third battle of Panipat was there. I have told you that story. If you remember that story, third battle of Panipat. Remember that story of third battle of Panipat?
how and why Marathas fought with the Afghans. Remember that? Ahmad Shah Durrani और Ahmad Shah Abdali, है ना, पानीपत में लड़ाई हुई थी, दोनों एक दूसरे को like both wanted to cut off the supplies. Ahmad Shah was successful in doing that, है ना, Ahmad Shah was successful in doing that. So this is whole medieval. आज ये अभी हमने क्या देखा है? This is something. This is the blueprint of medieval. So can you see? अभी जो हमने देखा, like आपके सामने जो एक टेबल बना हुआ है, this is the blueprint of medieval. This is the blueprint of medieval. These things we need to do. इसमें से वर्ल्ड को छोड़ के, वर्ल्ड will not be doing in this class world. So world will be doing in world history. ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप वहां पर करोगे, बट नॉट हियर. एंड ये जो नॉर्थ एंड साउथ है, यस, ये हम सारा करेंगे. मोस्ट ऑफ दीज विल बी डूइंग देम इन डिटेल. सो अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस, जैसे इंपीरियल चोलास, जो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे. जो कम इंपॉर्टेंट है, विल नॉट बी गोइंग इनटू सो मच ऑफ डिटेल्स according to the importance. But again, one of the other observation that I have is, I don't know why this area is something very interesting, but ये UPSC को नहीं लगता. UPSC does not find this area as interesting. Why I am saying so? If you divide the questions asked by UPSC into three, ancient, medieval, and modern, you will see that UPSC is tilted towards modern a lot, average, ancient, medieval, negligible. Not negligible, or you can say less than average. It's ancient more than medieval. It's ancient more than medieval. उठा के देखना previous years के papers को. When you are like picking the papers of like previously asked, you'll find the same thing. Less number of questions are there from medieval. But my advice is, if you are doing history, we must not leave medieval. Because मैंने क्या बोला? Less number of questions. मैंने ये नहीं बोला zero number of questions. मैंने बोला less number of questions. But less number of questions, sometimes it's this input-output ratio is very nice here. Like for current affairs, you need to study lots of things you need to study. इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी करंट अफेयर्स के लिए आपको, है ना. Still you are not very sure whether something will be asked from that material or not. You cannot be sure anytime. आप नहीं रह सकते हो sure. But in history, or you can say in polity, like जो हमारे conventional subjects हैं, उसमें ऐसा नहीं है. उसमें if some questions are asked, तो यहीं से ही पूछे जाएंगे. 99% or you can say up to 90%, more than 90% of the questions you can solve after doing these classes. If you are doing with me classes, अगर आप कर रहे हो, साथ में एक NCERT पढ़ लेना, old NCERT medieval, बस one book, just one book, old NCERT for medieval, एक बुक वो, और साथ में मेरे क्लास नोट्स, एक more than sufficient. इससे ज्यादा मत करना, ठीक है. इतना बहुत है. इतने में तो आप 90% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है. सो नाउ एक एक करके उठाएंगे. द फर्स्ट दैट वी आर पिकिंग टुडे इज पल्लवास. द फर्स्ट इज पल्लवास. So let me have the slide for Pallavas. Professor, quick question. Yes, Sinuja? Just a quick question. So, all these people that we saw from North India and South India in this medieval period were like all like feudatories of the previous ones, and did all of them like fight and win their dynasties? Most of the times they are feudatories. सबके आगे आपको एक वर्ड लिखा मिलेगा. पल्लवास ये थे, चालुक्यास वर feudatories of these, चोलास के स्टार्टिंग में ये उसके feudatory थे, यादव उसके feudatory थे. Most of these people are like feudatories of some other people. Okay, Sindhuja? Okay. Yeah. Okay, so first that we are taking is the Pallavas. So this is the Pallava territory. In medieval, specifically Pallavas, Chalukyas, and Cholas. These three. जब आप ये तीनों करोगे, Pallavas, Chalukyas, and Cholas, remember one thing. यहाँ पर जो chronology होती है ना, chronology of kings, more important than the chronology
is the cities. Cities. Which cities are like related to Pallavas? Which cities were developed by Chalukyas? Which cities important for Cholas? Which cities for Yadavs, Kakatiyas, Hoysalas? Cities बहुत important है. तो रिमेंबर जहां जहां सिटीज आएगा वहां वहां एक स्टार लगाते रहना. हर एक किसी में 1 or 2 cities will be very very important, है ना. एक सिटी या 2 सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी. लाइक पल्लवास, आई कैन इक्वेट पल्लवास विद 2 cities, कांची, कांचीपुरम एंड महाबलीपुरम. तो अगर कोई क्वेश्चन आया कि दिस टेम्पल कॉमा सिचुएटेड इन महाबलीपुरम was constructed by Cholas, Cheras, Pallavas और Pandyas, ठीक है, आंख बंद करके यू कैन टिक द आंसर पल्लवास. ठीक है, कांची, महाबलीपुरम. ऐसी चालुक्यास के लिए सिटी चेंज रहेगी, इट विल बी बादामी. बादामी. चालुक्यास के लिए सिटी चेंज बादामी. पांड्यास के लिए मदुरई, है ना, पांड्यास के लिए मदुरई. यादव्स के लिए देवगिरी. काकतियास के लिए वारंगल. होयसालास के लिए द्वारा समुद्रम. ठीक है. So remember this thing first. Second, now when we are doing this part, medieval part, in medieval, this Pallavas, Chalukyas, Cholas, ये जो हम करेंगे सारे के सारे, अभी यहाँ पे कुछ होगा. This is a development of architecture. अब होगा development of architecture. Development of architecture. The temples, like still present, like the temples are still present. So many temples are still present. आज भी temples present हैं. So there will be development of architecture. The architecture in the north will be architecture of temples. The architecture in the north will be different. The architecture in the south will be different. The temple architecture in the south will be called as Dravidian type of architecture. Dravidian type. The temples of the north, including Gupta period, will be called as Nagara style of temple architecture. दोनों का mix होगा. Nagara plus Dravidian, दोनों का mix होगा. In between, there will be another type of architecture that will be very good, Shubra and Damini, Sindhuja, Vesara type of architecture. These are the 3 important types of architecture which are found in India. Temples like 3 styles of temple architecture found in India: Nagara, Vesara and Dravidian. So जब भी हम ये करेंगे, पल्लवास करेंगे, so there will be so many temples. Yes, Abhinay, Vesara is like it is having the characteristics of both Vesara. Okay, Abhinay, तीनों डिटेल में बताऊंगा आपको. We'll be doing in detail all three तीनों डिटेल में. और यही not in our art and culture class, we'll be doing it here itself. Pallavas, Chalukyas कर ले here itself. We'll be doing temples here itself. यहीं पे कर लेंगे, so that you are having better understanding of the temples, because there will be so many names of temples now. अभी like South India is what? South India is India of temples. आप कहीं भी चले जाओ, it's like you go to Kanchi, you go to Mahabalipuram. Has anyone been to Mahabalipuram? कोई गया Mahabalipuram? मृगांक आपने इंडिया अच्छा घूमा है. मृगांक, I guess maximum from like in this class. So Mahabalipuram is a very nice place. So if anyone of you will try to search me on Facebook, तो my DP जो अभी भी उस Facebook पे लगी हुई, I very rarely I use that account. मुझे चलाना भी नहीं आता, सच बताऊं तो कोई खास. And in my Bharat Darshan, I had visited that place, Mahabalipuram. And Mahabalipuram में ही मेरा DP है वो Mahabalipuram का ही है. I'm standing in front of like some sculptures of Mahabalipuram. Okay, so अब हम चलते हैं Pallavas. So you can see the territories of Pallavas. तो Pallavas, who were Pallavas? अब ये कहाँ से आ गए? Who were these Pallavas? Where they were ruling? What was their capital? है ना, ये सारी बातें हमें करनी पड़ेंगी. Important kings कौन थे Pallavas के? ये सब कुछ हमें देखना पड़ेगा. First of all, the origin of Pallavas. Origin. When we discuss the origin, so the origin of Pallavas is shrouded in mystery. जैसे मानसून के लिए बोलते हैं ना,
the origin of monsoons is shrouded in mystery. Do you know this? The origin of monsoon is shrouded in mystery. We don't know how monsoons are originated. Do you know how monsoons are originated? अगर कोई आपसे पूछे, very important. Anyone is aware like how monsoons are originated? कैसे monsoons originate होते हैं? पता है किसी को? India is a monsoonal country. किसी को नहीं आइडिया? नो आइडिया? एनीवन? अरे मॉनसून्स के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है. इंडिया में लाइक द रेनफॉल इज मॉनसूनल रेनफॉल. यस अभिनय, चैत्रा, सिंधुजा, दामिनी, जानवी, कांची, मृगांक, सबना, साहिती, शुभ्रा. नो वन इज अवेयर हाउ लाइक अबाउट मॉनसून्स. कभी नहीं पढ़ा मॉनसून्स के बारे में और किसी ने भी नहीं पढ़ा. ऐसा कैसे हो सकता है? You don't know like about monsoons. Oh my God! And still, I guess you have not yet covered in your GS classes as well. And अभी तक GS classes में भी नहीं करा, तो you'll be doing it in the GS classes. Monsoons. What are monsoons? Still in humidity. Okay. So what are monsoons? तो monsoons क्या है? तो जो monsoons हैं, like these are the southwest monsoons coming like from here. Southwest monsoons बड़ा सिंपल है. जो ट्रेडिशनल थ्योरी है ना, सबसे बेस्ट थ्योरी है. मुझे तो सबसे बड़ा वही लगती है, सबसे आसान है. इट इज समथिंग कि during summers this area becomes very hot, very hot. Very hot means high temperature. Relatively this area is having low temperature. There is a rule in climatology. एक rule है, golden rule. The rule is wherever and whenever we are having high temperature, at that point of time, at that place, we'll be having low pressure. And low temperature means high pressure. किसी को अगर कभी समझ ना आए, अगर कभी किसी को ये समझ ना आए, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इतना सोचना है कि if you are having something, आप उसको गर्म करने की कोशिश करना है ना. try to heat it. जब आप उसको हीट करोगे तो वो ऊपर उठ जाएगा, है ना. it will rise. जैसे आपने मिल्क देखा, मिल्क when you are boiling milk, so most of the time our moms are saying कि बेटा गैस देख लेना, बंद कर देना गैस, and never we are like switching it off, and 90% of the times it's spilling over, and उसके बाद most of the times like we have something, है ना. उसके बाद समझ ही रहे होगे. So हमें पता चलता है कि what the size of the slippers that mom is wearing. ठीक है, उसी टाइम पे हमें पता चलता है, अदरवाइज हम लोगों को नहीं पता होता. So why that milk is coming out of that pot, है ना, because it's high temperature, है ना. उसका टेम्परेचर बढ़ गया है तो प्रेशर अभी कम हो गया. it's trying to rise, है ना. तो एक और गोल्डन रूल है, air moves from the region of high pressure to low pressure always. कुछ भी हो जाए, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा. लाइक देयर आर टू रूम्स, दोनों बोथ आर कनेक्टेड बाय ए पाइप, बट दोनों के बीच में आपने एक वाल्व लगा रखा है. इन वन रूम देयर इज हाई प्रेशर, आपने बहुत सारे एयर इसमें छोड़ रखी है, बट इन वन रूम दिस इज एयर टाइट कंपार्टमेंट एंड यू हैव मेड इट वैक्यूम. आपने इसको वैक्यूम बना दिया, यू हैव सक्ड ऑल द एयर, एंड देन यू सडनली व्हाट यू डू, आपने क्या करा, आपने इसको जो वाल्व था, ये वाल्व आपने खोल दिया. जैसे ही आप ये वाल्व खोलोगे, as soon as you will open this valve, the air will start moving from this to this, high pressure to low pressure. Okay, so this is also a rule. So कुछ नहीं है, बस गर्मियों के टाइम पे this area becomes so hot, the Thar desert, it becomes so hot, so pressure becomes very less. Like Bay of Bengal में relatively it's like low temperature and pressure is high, air starts moving towards like this region, and this is why like जो air monsoons आ रहे हैं, it is parallel to the Aravallis, and this is why जिस एरिया की वजह से monsoons आया था, that area becomes like rainfall deficient area, because like Aravallis are parallel to the winds.
Aravali's are parallel to the winds. यहाँ पर Western Ghats हैं, they are not parallel. If winds are coming like this, this is the Western Ghat. Winds are coming like this, they are the mountains. ये mountains हैं, winds are, mountains are forcing this wind to rise. And when the mountains are forcing the winds to rise, what is happening? What is happening? Cloud formation. And cloud formation is must for rainfall. Without clouds, rainfall cannot be there, or precipitation cannot be there. So like cloud formation is must. For rainfall to occur, air needs to move up. अगर air ऊपर नहीं गई तो कभी भी rainfall नहीं होगी. And if air is coming down, कभी rainfall नहीं होगा. यहाँ पर high क्या हो जाएगा? यहाँ पर high pressure हो जाएगा, है ना? High pressure हो जाएगा. कभी भी cloud formation नहीं होगा. Like no cloud formation will take place. There are some theories as well, like ITCZ concept है, El Nino, ENSO event, but सबके सब बकवास है, सब बेकार है. सबसे बढ़िया ये थ्योरी है जो पुराने जमाने की 1600s में थ्योरी आ गई थी, जो मैंने अभी आपको बताई. ओल्डेस्ट थ्योरी, स्टिल द बेस्ट एंड इजीएस्ट. ओके, तो पल्लवास. तो पल्लवास के लिए मैंने बोला द ओरिजिन ऑफ पल्लवास इज श्राउडेड इन मिस्ट्री बिकॉज देयर आर सो मेनी व्यूज कि कहाँ से आए पल्लवास. द फर्स्ट व्यू सेज कि पल्लवास एक्चुअली in their origin is like they are the foreigners. ये इंडियन है ही नहीं, ये तो पार्थियंस कुछ थे, पार्थियंस के बचे कुछ लोग थे जो यहाँ पर आ गए, है ना. One view is this. Another view is कि during the time of Vakatakas, remember Vakatakas? याद है Vakatakas? गुप्ता पीरियड, Vakatakas, याद होगा आपको, है ना, CG2. So during the time of Vakatakas, there were some royal Brahmins. The descendants of these Brahmins are these Pallavas. And these people, कहाँ से आए? They were the descendants of royal Brahmins during the period of Vakatakas. The third view says that these people, Pallavas, they were actually a local tribe. There's a region in present-day Tamil Nadu. एक region है. The region is called as Tondai Mandalam. Tondai Mandalam. I guess मेरे पास ये होगा Tondai Mandalam. Yes, this is that Tondai Mandalam. So there was a local tribe, Tondai Mandalam. Tondai Mandalam एक area के अंदर एक local tribe थी. So these were the people who were staying there, and then they became feudatories of Satavahanas. ये Satavahanas के feudatory बन गए. When they became feudatories of Satavahanas, तो आप समझ जाओ क्या हो जाएगा, है ना. Feudatories, feudalism, you remember? Over the period of time, these people will gain control of the lands of the Satavahanas. यही होगा ना. तो ऐसा ही कुछ हुआ. So we don't know what the exact origin of these people, but तीनों views मैंने आपको बता दिए. So Pallavas, their capital was Kanchipuram. Kanchi, will you remember? Yes, Kanchi, will you remember? The capital of Pallavas was Kanchipuram. Okay, Kanchi? तो कांची फर्स्ट डे जब आप क्लास में आए थे तो आपके नाम से मुझे पल्लवास याद आया था. ओके कांची. So all of you can remember the capital of Pallavas as like Kanchi or Kanchipuram. we can make use of Kanchi's name. Okay, sorry Kanchi. Abhinay sir, please repeat the third view. No props Abhinay मैंने बोला third view. According to the third view, these people, they were the local tribe who were residing in an area. That area was called as Tondai Mandalam, and like these were the feudatories of Satavahanas. Okay, they were the feudatories of Satavahanas and like residing in at which place? Tondai Mandalam. Okay, चलते हैं आगे. So the capital was Kanchipuram. Kanchi ने बताया हमें ये capital Kanchipuram है, and the territories, as you can see in the map, the territories extended from the northern part of the Andhra Pradesh to river Kaveri. अब इनकी story like slide से नहीं, we'll use the whiteboard.
व्हाइट बोर्ड. ओके, सो एक बार थोड़ी सी क्रोनोलॉजी देख लेते हैं. तो व्हेन वी सी द क्रोनोलॉजी, सम इम्पॉर्टेंट किंग्स, वैसे तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट किंग्स हैं, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको. नंबर 1, दिस इज नॉट द फाउंडर, इंपॉर्टेंट वन. महेंद्र वर्मन one. After Mahendra Varman I, his son Narasimha Varman II. Narasimha Varman I, and number 3 Narasimha Varman II. इसके बाद में नंबर 4 नंदी वर्मन, और 5वां इसको याद रखना, अपराजिता. I guess there's a movie also by this name, Aparajita. Movie from South, Aparajita, I guess, है ना, एक मूवी है, काफी फेमस मूवी थी वैसे, अपराजिता मूवी, आई गेस. तो महेंद्र वर्मन 1, नरसिम्हा वर्मन 1, नरसिम्हा वर्मन 2, नंदी वर्मन एंड अपराजिता. इनके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, स्पेशली दीज 2 पर्सन 1 and 2. सो इनको आपको याद रखना है. आउट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर दीज 2 पीपल. व्हाई? आई विल टेल यू व्हाई. Mahendra Varman, he was contemporary of Harsha. जिस टाइम हर्षा नॉर्थ में था, उसी टाइम महेंद्र वर्मन कहां पर था? साउथ में था. एंड रिमेंबर, हर्षा को हराया किसने था? रिमेंबर हु डिफीटेड हर्षा? हु हैज डिफीटेड हर्षा? किसने हराया था हर्षा को? पुलकेशिन II. क्या बात है. दैट मींस पुलकेशिन II वाज आल्सो कंटेम्पररी चालुक्यास. So that means पल्लवास के कंटेम्पररी साउथ में कौन थे? चालुक्यास. तो एक एरिया में पल्लवास, एक में चालुक्यास. And till now what we have seen, the 2 neighbors always they have remained happily, or how? Tell me, 2 neighbors in India, like हमेशा बड़े हैप्पी तरीके से रहते थे. They were always fighting, है ना. अगर चालुक्यास, this person Pulakesin, if this man is like going and fighting with Harsha was in the north, तो महेंद्र वर्मन को कैसे छोड़ेंगे भाई साहब? तो महेंद्र वर्मन वर्सेस पुलकेशिन II हो गया, एंड पुलकेशिन II also defeated महेंद्र वर्मन. ठीक है. इनफैक्ट महेंद्र वर्मन की डेथ हो गई थी इस बैटल के अंदर. एंड दिस मैन महेंद्र वर्मन, it was this person who started or who initiated construction of cave temples at Mahabalipuram. So Mahabalipuram, अभी जो मृगांक ने बोला कि मृगांक has been to Mahabalipuram, except मृगांक, no one has been to Mahabalipuram. किसने नहीं देखा महाबलीपुरम? शुभ्रा, साहिती, सबना, कांची, जानवी, दामिनी, सिंधुजा, चैत्रा, अभिनय. ओहो, इट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. एंड जो ये टेम्पल्स है ना, इन टेम्पल्स के पास में देयर इज अ पार्क. द नेम ऑफ दैट पार्क इज क्रोकोडाइल पार्क. कांचीपुरम. साहित्य, you have been to Kanchipuram. So there is a place called as Crocodile Park. मृगांक, आपने देखा क्रोकोडाइल पार्क नियर दिस महाबलीपुरम? देखा मृगांक? क्या बात है मृगांक. So मृगांक, फिर तो मृगांक ने देखा होगा. there is a park, there are thousands of crocodiles, that too of different ages. I went, but at that time I was, oh, Kanchi, इतने बड़े गए थे. 1 year old, and you remember that? Kanchi, you remember that? Then you are a Shaktiman. Actually, I was asking to my dad about Meenakshi temple, that we went or not. So he was telling me we went, but you were so small at that time. Okay, सही है. So Mahendra Varman I was defeated by Pulakesin II, who had also defeated Harsha. And this man initiated the construction of cave temples at Mahabalipuram. मैंने बोला initiated, start करवाया था. Finish किसने करवाया? Complete किसने करवाया? The son Narasimha Varman. It was Narasimha Varman who completed the cave temples of Mahabalipuram.
ठीक है. Mahendravarman was initially a Jain. He was a Jain. Later, he changed his religion and became a Hindu. And in Hinduism, he took Shaivism. Shaivism. Okay. अब महेंद्र वर्मन ने एक बहुत बढ़िया बुक लिखी है. Very popular book he has written. The name of that book, है ना, नाम थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है, but story बहुत बढ़िया है. The book he has written, the name is Matt Vilas Prahasana. Matt Vilas Prahasana. तो आप काफी कुछ लोगों को हो सकता है नाम मुश्किल लग रहा होगा. The book written in Sanskrit, it is a satire. It's basically satire written by Mahendra Varman. Before telling you the story of this book, let me ask something. Have you seen people drinking, like not water, alcohol? Have you seen people, like how people are reacting after having alcohol? Have you seen? Yes, Abhinay? Mrigank, especially? No, this is also like the prejudice. I'm asking this thing from Abhinay and Mrigank. So Abhinay is saying yes, Shubha is saying yes, Damini yes, Janvi yes. Abhinay wants to share his experience but can't. His parents are sitting like by the side of Abhinay. Okay. So when people drink alcohol, how they react? What is the reaction of the people? Can anyone want to share the experience? अरे अपना नहीं, अपने किसी का दोस्त का, किसी का बता सकते हो. Sindhu just pass out. Okay, do you want to share any experience? Anyone? Oh, I Yes, could. Yes, Sindhu. So, yeah, I have a lot of my friends who do drink, so they kind of like tend to forget what they speak. I mean, during the next day, they tend to forget. And then they have like a lot of uneasiness, and some people also puke and then they pass out. So, like a lot of instances like that. Okay, so basically, others enjoy while one is drinking, one is drinking and one is reacting, others usually enjoy. And generally, like things like this happens. And I don't drink, like I'm a non-drinker, but I know like two characteristics of the people who are drinking. The two famous sentence, and I'll use Hindi for the sentence, like it will be very like ज़्यादा authentic लगेगा. The two sentences are, first, like after drinking, like if two people are drinking, Abhinay and Mrigank are drinking, so पीने के बाद में अभिनय क्या dialogue मारेंगे? तू मेरा भाई है. This is a very common statement, है ना? तू मेरा भाई है. और and the second is गाड़ी मैं चलाऊंगा, है ना? गाड़ी मैं चलाऊंगा, अब कुछ भी हो जाए, है ना? Though the person cannot stand, but गाड़ी मैं चलाऊंगा. So like two things that I have observed over this period, and during my training days and like when I was in my services. So like my friends, मैं अपने दोस्तों को बता रहा हूँ आपको. This thing I have observed. So Matt Vilas Prahasana, written by Mahendra Varman. So now many of you must be thinking why I am going to drinking. I went to drinking for this reason. Matt Vilas Prahasana, written by Mahendra Varman I in Sanskrit, a satire, sir, to improve गाड़ी तेरा भाई चला. Abhinay, thank you. Abhinay, thank you. Awesome. देखा कितना एक्सपीरियंस है अभिनय को. मैं तो अभिनय पहले समझ गया था. You are having nice experience, Abhinay. I can understand that. Okay, so this book was written by Mahendra Varman I, and in this book, do you know what he has written? Abhinay मैं समझ गया. Do you know what he has written? He has written about habit of drinking liquor. Habit of drinking liquor. Liquor इसके बारे में book है. In fact, he has written the comic activities of people they make after drinking. The comic activities of people that they make after drinking. I have lots of
pictures and videos of my batchmates, like जो उन्होंने सारे scenes किए थे. So I was the one like मुझे time pass करने के लिए I used to like shoot them. तो मेरे पास बहुत सारे हैं, and many times I have blackmailed, है ना, कई बार मैंने blackmail किया हम लोगों को वो दिखा के. So this person, what he has written in this book, he has given a discussion. I was the only sober one to remember everything. So in this book there is a discussion. देखो discussion कितना बढ़िया होगा. Like there is a discussion of a drunken man. There is a man like who is drunk. एक पूरा खड़ा भी नहीं हो पा रहा है. There's a man who is drunk, and now he is accusing a Buddhist monk. He is accusing a Buddhist monk that you have stolen my begging bowl. And a drunken man क्या बोल रहा है? This drunk person, he is saying to a Buddhist monk, I was having a begging bowl and you have stolen it. So the discussion of a drunken man with a Buddhist monk on the with the center stage as begging bowl, एक discussion है in this book, मट विलास प्रहसन. सुन के ऐसा नहीं लगता कि क्या शानदार होगा, गजब बुक होगी, है ना? सुन के ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि क्या मस्त प्लॉट होगा? इट वाज लाइक व्हाट अ वंडरफुल प्लॉट. कितना बढ़िया प्लॉट ढूंढ के निकाला महेंद्र वर्मन वन ने, है ना? सो महेंद्र वर्मन वन wrote a book called as Mat Vilas Prahasana. Mat Vilas Prahasana. The book was written in Sanskrit. It is a satire. In this, he has given the habit of drinking liquor and also like the activities which people make after like they are drunk. And also it gives a discussion of a drunken man with Buddhist monk, and where this drunken man accuses monk of stealing his begging bowl. Okay, abhi pata chala why I was talking about this drinking habit. It was because of this book, Mat Vilas Prahasana. 99% you will forget the name of the book, Mat Vilas Prahasana, but you will not forget the context. You will not forget the content of this book. 99% आपको थीम याद रहने वाला है ना? So ऐसा ही होता है, like alcohol की बात ही कुछ ऐसी है. So thank you all, thank you very much. We'll be meeting tomorrow again and we'll be completing Pallavas, and I hope I guess like we can start Chalukyas also tomorrow. ठीक है? Okay, bye bye, have a great day.